cuties. Welcome to my channel Al-Shafa Medicos. Today, with my second video, I am going to explain you about immunity. So, without wasting time, let's start the topic. Today, we are going to deal with immunity, its types, and mechanism. So, let us see what is immunity. जनरल लैंग्वेज में बोले तो इम्यूनिटी एक बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, प्रोटेक्टिंग मैकेनिज़्म जो हमको बाहर के पैथोजन से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज वगैरह से प्रोटेक्ट करता है. सो लेट्स सी व्हाट इज़ इट्स डेफिनेशन. It is defined as a capacity of a body to resist pathogenic, that is disease causing agents, or it is ability of a body to resist the entry of different types of foreign bodies like bacteria, virus, toxic substance, etc. So let's see what are the types of immunity. So basically there are two types, innate immunity and acquired immunity. So let's see what is innate immunity in detail. Innate immunity बोले तो is a inborn capacity of the body to resist pathogen. ये हर चिल्ड्रंस के पास इनबॉर्न रहती है, बाई बर्थ ही प्रेजेंट रहती है innate immunity. और natural immunity by chance if organism enters the body it kills them. ये innate immunity natural immunity रहती है बॉडी की. अगर इफ़ बाई चांस ऑल्सो एक ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी बॉडी में इंटर हो जाए तो इन्नेट इम्यूनिटी के थ्रू वो किल कर दिया जाता है, मार दिया जाता है. इन्नेट इम्यूनिटी बोले तो फर्स्ट लाइन डिफेंस है अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ पैथोजेंस. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में इंटर होने वाला है सबसे पहले किसके थ्रू मारा जाएगा वो बोले तो इन्नेट इम्यूनिटी के थ्रू. सो उसे क्या बोलते हैं, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. इट किल्स एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस एंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. सो इट इज़ कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड एज नॉन स्पेसिफिक. ओके. एंड इट्स मैकेनिज्म. So let's see what is the mechanism of innate immunity in the different systems. First, in gastrointestinal system. Gastrointestinal system में in stomach, in our gastric system, वो कैसे pathogens को मारने वाला है innate immunity बोल तो by enzymes. Different types of enzymes are there. Salivary enzymes, salivary amylase, gastric enzymes are there in stomach, and lysozyme in saliva. Lysozyme is also one of the enzyme which kills bacteria, viruses, different kind of pathogens in the saliva, in our mouth only. And in respiratory system by defensins, cathlidins. In epithelial cells of air passage. डिफेंसिन कैथलिडेंस क्या करते हैं, जो भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी पैथोजन एंटर होने वाला है इपिथेलियल सेल्स पे जो हमारे एयर पैसेज के प्रेजेंट है. इपिथेलियल सेल्स बोल तो जो सेल्स है हमारे एयर पैसेज के, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम के, वहाँ पे उन लोग किल कर देते हैं पैथोजेंस को. और न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, माइक्रोफेजेस, एनके सेल्स नेचुरल किलर सेल्स इन लंग्स. न्यूट्रोफिल्स, lymphocytes and macrophages, these are all types of WBC, that white blood cells. white blood cells बोले तो जो हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स है, जो मोस्टली उनका जो फंक्शन है बोले तो किलिंग द पैथोजेंस. एंड इन यूरिनोजेनाइटल सिस्टम एसिडिटी इन यूरिन एंड वजाना. जो एसिडिक लेवल है यूरिन में और वजाना इज़ अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फीमेल, उसके थ्रू एसिड लेवल के थ्रू वो पैथोजेंस किल हो जाते हैं. एंड इन स्किन केराटिनाइज स्ट्रैटम कॉर्नियम बीटा डिफेंसिन्स लाइसोजाइम. हियर ऑल्सो लाइसोजाइम. ओके. जो हमारे स्किन वगैरह में ये सब के थ्रू पैथोजेंस किल होते हैं. इंटरफेरॉन स्टॉप्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरस, पैरासाइट्स, कैंसर सेल्स. इंटरफेरॉन्स मल्टीप्लिकेशन रोक देते हैं वायरस, पैरासाइट्स एंड कैंसर सेल्स का. कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्सेलरेट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या करते हैं, डायरेक्टली किल नहीं करते हैं, बट दे विल इंक्रीज दिस डिस्ट्रक्शन, मतलब उन लोगों को डिस्ट्रॉय करने का, ख़त्म करने का जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर देते हैं कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स. So let's see what is acquired immunity and AI. It is the resistance developed in the body against any specific foreign body, that is bacteria, virus, toxins, vaccines और transplanted tissues. ये acquired immunity एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन्स, वैक्सीन्स और ट्रांसप्लांटेड टिश्यूज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी में डेवलप्ड की जाती बर्थ के बाद. एक चिल्ड्रन बर्थ के बाद ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी को डेवलप्ड किया जाता है बाय गिविंग एंटीजेंस, एंटीबॉडीज. इट डेवलप्स. So that's why it is known as specific immunity. As you know that polio vaccines, these are all a kind of acquired immunity. They are developed after a birth against a particular pathogen, means against a particular bacteria, virus. So it is the most powerful immune mechanism against microorganisms. ये most powerful immune system होता है हमारी बॉडी में. lymphocytes are responsible for acquired immunity. Mostly acquired immunity के लिए responsible कौन है बोले तो lymphocytes. Lymphocytes are the one type of WBC. As I told earlier, there are two types of AI, that is cellular immunity and humoral immunity. Cellular, the immunity which is performing at the cell level, cells में जो perform कर रही है, and the humoral immunity जो blood में, जो भी हमारे ब्लड्स वगैरह में जो भी पैथोजेंस वगैरह एंटर होंगे, इम्यूनल इम्यूनिटी के थ्रू किल हो जाएंगे. ओके. फॉर द अबाउट टू टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट, lymphocytes are responsible for both this immune immunity and cellular immunity. Who are responsible means lymphocytes. Okay. So let's see development and processing of lymphocytes. In fetus, lymphocytes develop from bone marrow. जब fetus that growing baby in the womb of a mother, okay, वहाँ पे lymphocytes कहाँ से बनते हैं बोले तो bone marrow से बनते हैं, and release in the circulation and are differentiated into two categories. हमारे blood circulation में release हो जाते हैं और two types में differentiate हो जाते हैं, that is T lymphocytes and B lymphocytes. T lymphocytes which are highly responsible for developing cellular immunity, and B lymphocytes which are responsible for developing humoral immunity. So let's see one by one what is T lymphocytes, B lymphocytes. T lymphocytes which are processed in thymus. It process between just before and after few months of birth. Okay. T lymphocytes thymus में बनते हैं, एंड कब प्रोसेस होते हैं बोले तो, कब बनते हैं बोले तो जस्ट बिफोर या जस्ट आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ बर्थ. ओके. थाइमस सीक्रेट थाइमोसिन. थाइमोसिन सीक्रेट करता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यूनिटी. थाइमोसिन ही इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रहा है. ओके. टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. ड्यूरिंग प्रोसेसिंग टी लिम्फोसाइट ट्रांसफर इनटू 4 टाइप्स. ओके. टी लिम्फोसाइट 4 टाइप्स में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जब वो प्रोसेसिंग के थ्रू जाता है ना थाइमस में, वो 4 फॉर्म्स में डेवलप्ड होता है, दैट इज़ हेल्पर और इंड्यूसर टी सेल्स एंड ऑल्सो कॉल्ड एज CD4 सेल्स, साइटोटॉक्सिक किलर टी सेल्स और CD8 सेल्स, सप्रेसर टी सेल्स एंड द लास्ट वन मेमोरी टी सेल्स. सो वेयर दे स्टोर, हमारी बॉडी में किधर स्टोर होते हैं ये टी लिम्फोसाइट्स बोले तो, इन लिम्फॉइड टिश्यूज ऑफ लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, GI ट्रैक्ट. ओके. दीज आर ऑल द प्लेसेस वेयर टी लिम्फोसाइट्स स्टोर्ड. सो लेट्स सी व्हाट इज बी लिम्फोसाइट्स. डिस्कवर इन बर्सा ऑफ फैब्रिशियस, दैट इज़ बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस, इट्स अ लिम्फॉइड ऑर्गन. ये एक लिम्फॉइड ऑर्गन है बर्ड्स में, हेंस द नेम बी लिम्फोसाइट्स. इसके थ्रू बर्ड्स ऑफ फैब्रिशियस में वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर होने की वजह से उन लोगों का नाम बी लिम्फोसाइट्स पड़ गया. प्रोसेस्ड इन लीवर ड्यूरिंग फीटल लाइफ.
वो फीटल लाइफ के में कहाँ पे प्रोसेस होते हैं, लीवर में, और आफ्टर बर्थ bone marrow. Okay, types of B lymphocytes, that is typically two types, that is plasma cells or memory cells. And where they stored means lymphoid tissues of lymph nodes, spleen, bone marrow, GI tract. These are all the places where B lymphocytes store. So let's see what is antigens. It is a new topic, but antigens play a crucial role in developing acquired immunity. So we have to see what is antigens. These are substances which induce specific immune reaction in the body. ये antigens क्या करता है, एक particular specific immune reaction हमारी body में develop करते हैं. There are two types of antigens. ये एंटीजन स्पेसिफिक रिएक्शन प्रोड्यूस करने की वजह से ही हमारा जो इम्यून मैकेनिज्म है वो ट्रिगर होता है, मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाता है. टू टाइप्स कौन से हैं, ऑटो एंटीजन्स और सेल्फ एंटीजन, जो हमारे बॉडी के ओन सेल्स में प्रेजेंट रहते हैं, सच एज ए एंटीजन, बी एंटीजन इन आरबीसीज. एंड नेक्स्ट सेकेंड वन इज फॉरेन एंटीजन और नॉन सेल्फ विच इंटर्स द बॉडी फ्रॉम आउटसाइड. ये टू टाइप्स है, auto antigens or self antigens, and the second one is foreign antigen or non self antigen. Okay, following are non self antigens. ये अब नॉन सेल्फ एंटीजेंस कौन से हैं वो देखिए. रिसेप्टर्स ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन्स फ्रॉम माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म, मटेरियल फ्रॉम ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन्स और इनकम्पैटिबल ब्लड सेल्स. while incompatible blood cells, as you know, when a patient suffers blood deficiency, so doctor is going to tell that blood transfusion is needed. So in that cases, if there is a mismatch of the blood, these non-self antigens are going to play role. Allergens or allergic substance like pollen grains. So let's see what are the types of antigens depending upon response developed against them in the body. हमारे बॉडी में जिस तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है उसके अपॉन देर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस. एंटीजेंस विच इंड्यूस डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी और प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, जो क्या करते हैं, इम्यूनिटी को इंड्यूस करते हैं, मतलब ट्रिगर करते हैं और एंटीबॉडीज़ को बनाते हैं. उसे क्या बोलते हैं, इम्यूनोजेनिसिटी. एंटीजेंस and the second one is antigens which react with specific antibodies produce allergic reactions. specific antibodies के साथ react होके antigens allergic reactions produce करते हैं, उससे क्या बोलते हैं, allergic reactivity. These both two types of antigens. And let's see what is the chemical nature of antigens. Antigens are mostly proteins, conjugated proteins, मतलब combined. दो मिल के जो बना रहे हैं, लाइपोप्रोटीन्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड न्यूक्लियोप्रोटीन्स. कंबाइंड मीन्स लाइक लाइपो हियर फॉर फैट एंड द प्रोटीन्स, ग्लाइको हियर कार्बोहाइड्रेट्स एंड द प्रोटीन्स, एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड द प्रोटीन्स. दिस two combined and formed a antigen. These are the natures. They are typically conjugated proteins. Antigens are. Mechanism of acquired immunity. So let's see. Acquired immunity develops again invading organism. जो भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म इंटर होता है उनके अगेंस्ट डेवलप होती है. डिस्ट्रक्शन ऑफ द इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म बाय एंटीजेंस प्रेजेंटिंग साइड, और एंटीजन प्रेजेंटिंग साइड्स के थ्रू डिस्ट्रक्ट करता है उन लोग को, मतलब उनको डिस्ट्रॉय करता है, उनको मारता है. रिलीज ऑफ एंटीजन रिलीज़ करता है. उसके बाद प्रेजेंटेशन ऑफ एंटीजेंस टू, जो एंटीजेंस रिलीज हो गया है वो प्रेजेंट कहाँ कहाँ होता है, टी लिम्फोसाइट्स को होते हैं. इफ़ इट इज़ अ सेल मीडिएट इम्यूनिटी, इफ़ द डिस्ट्रक्शन इज इन सेल्स, then that antigen is going to present to T lymphocytes. And if the destruction is in the immural immunity, if it is in blood, so it is going to present to B lymphocytes. Okay, development of cell mediated immunity. Then here in B lymphocyte, development of humoral immunity. And in T lymphocytes, activation of helper T cells.
then activation of cytotoxic T cells, then destruction of the invading organism by direct attack. एंड यहाँ पे डिस्ट्रक्ट हो जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है जो भी इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म है डायरेक्टली. बट इन बी लिम्फोसाइट्स, activation of the B cells and formation of the plasma cells, production of the antibodies, and the destruction of the invading organisms by antibodies. Okay, here they are in B lymphocytes, they are destroying with the help of producing antibodies, particular antibodies. So the destruction is permanent, and as I hope you will understand. Thank you for watching.